Good morning, guys. So today we are having expiry. Hope the voice is audible and hope you didn't carry any positions. इन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग ज़्यादा एक्साइटेड होके पोजीशन कैरी कर देते हैं, राइट? तो इसलिए मैंने बोला कि कैरी मत करो पोजीशन, ऑल्दो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पर दो ट्रेंड लाइन है। एक ट्रेंड लाइन में तो ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट किया नहीं और ऐसे करके ये जा नहीं सकता है। एक बार तो ये नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है? एक बार स्ट्राइक देख लेते हैं। सो गैप डाउन हो रहा है, इसका मतलब है नहीं कि गैप डाउन होने के बाद ही लोग खरीद लेते हैं, ठीक है? डोंट बाय इन दिस गैप डाउन, let it come down to at least there's a good support over here. I think support गुड सपोर्ट तो यार, गुड सपोर्ट अगर बोला जाए तो ओके गाइस, वी आर ओपन, वी आर ऑफिशियली ओपन, ठीक है? इसको एक बार रिफ्रेश किया जाए। Okay, nice gap down. Let's check the volume once. Okay, volume buy side में there's a good amount of volume, guys, buy side में, and अगर सुबह में ये गैप फिलिंग कर दे तो there's nothing which we can do. उस गैप फिल वाला स्ट्रेटजी गया हाथ से, पर अगर नहीं करता है then we'll have a chance later onwards. यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट बना सकता है मार्केट, दिस एरिया। Perfect. Okay. So this is the 3-minute time frame which I have open, and this is the 5-minute time frame, and both are required, I feel, during an intraday trade. 3-minute time frame allows you to see those short-term swings which you would not be able to see in the 5-minute time frame, right? Chalo. Best method अभी मैं बोलूँगा कि if you want to take a trade, short call options 40,900 सी को शॉर्ट कर दो और बैठ जाओ, बिकॉज ये नीचे नीचे तो आने वाला है, नो डाउट। आया, नीचे आया नाइसली, ठीक है? Amazing, guys. So first target, let's see, this will definitely reach this target, first target. Yes, oh wow, beautiful, beautiful, beautiful. Wow, good amount of selling, good amount of selling. सपोर्ट पा सकता है, बट अगर एक रेड कैंडल हुआ तो सेकंड भी रेड कैंडल होना चाहिए, but buying volume is on the higher side. That is something which we need to keep in mind.
जब भी मैंने बोला कॉल शॉर्ट करो तभी ये बहुत ही अच्छा मोमेंट दे गया, राइट एकदम। मैंने बोला कॉल शॉर्ट करो और नीचे आ गया, सही है। होप यू आर इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा अभी 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट जितना भी मिल रहा है अभी ट्रेल कर लो, ठीक है। स्टॉप लॉस फटाफट, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, बिकॉज टुडे इट्स गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल डे। और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, 50 पॉइंट तो मिल गया होगा अभी। 50 पॉइंट मिल गया है तो सीधा बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। इतना बड़ा कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन दे दिया कल का तरह, कोई ठीक नहीं है। एक कैंडल रेड, दूसरा कैंडल ग्रीन, मजाक चल रहा है क्या इधर में? बैंक निफ्टी वैसे ही कर रहा था इतना दिन से, तो हो ही सकता है एक कैंडल रेड दूसरा कैंडल ग्रीन दे दे। तो अच्छा खासा सेलिंग आया। ओके गाइस, we had booked in the morning itself, we have booked a profit। भी ज्यादा लालच मत करो, जितना ज्यादा लालच करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कम होते जाएगा। वैसे भी आज एक्सपायरी है। ओके सेकंड कैंडल गाइस, ये भी रेड में ही जाएगा। इट्स कमिंग क्लोज टू द सपोर्ट, हाँ। परफेक्ट सपोर्ट गाइस, परफेक्ट। इतना ज्यादा परफेक्ट हो गया ये सपोर्ट, जस्ट टच एंड गो, वाओ परफेक्ट। इसलिए मैंने बोला बुक कर लो भाई, बुक कर लो। फिर ये सपोर्ट लेके सीधा ऊपर चला जाएगा, सब प्रॉफिट हाथ से गया, सब प्रॉफिट खत्म, एकदम डॉट डॉट पिन पॉइंट सपोर्ट, और क्या चाहिए। हाँ? पूरा प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा। 50 पॉइंट इज मोर देन एनफ फॉर वन सिंगल डे। 50 पॉइंट रोज अगर 50 पॉइंट लेते हो, 50 पॉइंट 40 पॉइंट ऐसा करके लेते हो, अगर 10 भी ऐसा अच्छा दिन गया तो कितना हो जाता है, 500 पॉइंट हो जाता है एक महीना में। एक महीना में 500 पॉइंट इज मोर देन एनफ। 100 लॉट्स, 100 क्वांटिटी में अगर लेते हो 500 पॉइंट 1 मंथ, दैट्स आई थिंक एनफ, 50,000 रुपीज, और क्या चाहिए। वो भी तो देखो काम कितना कर रहे हो, लाइक यू ओनली वर्किंग इन द मॉर्निंग, ओनली 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, डन। मॉर्निंग का मोमेंट ही पकड़ना है और कुछ करना नहीं है, और हम लोगों को देखना नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो, फर्स्ट ट्रेड ब्यूटीफुल, वी हैव booked a good amount of profit। एक बार ऑप्शन चेंज देख लेता हूँ। ऑप्शन चेन में 40,900, 40,900 मैंने बोला था शॉर्ट करने आज सुबह में। ओपन, हाँ एंड डन। वही कुछ 50 पॉइंट मिल गया इसमें, अबाउट 170 में बोला था मैं शॉर्ट करने के लिए, एंड सीधा आके गिर गया 123, ब्यूटीफुल। पुट ऑप्शन भी देखा जाए, पुट ऑप्शन भी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। आई देगा 31, हाँ
लास्ट में तो ये रिकवरी करने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट if the RBI policy, if they hike the rate, तब we can face a problem guys. ठीक है, गुड रिजेक्शन। चलो चलो एकदम फटाफट नीचे गिर जाओ, ये वाला सपोर्ट को तोड़ेगा ना एक बार, फिर तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 780, पर आने नहीं देंगे। इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर है, अभी भी इतना बाइंग प्रेशर है। फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल गाइस, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड वाज प्रॉफिटेबल। नाउ वी आर लुकिंग फॉर दी सेकंड ट्रेड। ट्रेड सेटअप आएगा फिर हम लोग घुसेंगे, ऐसे वैसे नहीं घुसेंगे। That's why I told you short call option, that would be the best option right now. If you are shorting the call option, then you would actually be gaining a lot of theta over here, a lot of theta. ठीक है, एक बार ये तोड़ेगा ना इसको, एक बार बस। 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा रेड कैंडल बना हुआ है, बट सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाइसी है अभी फिलहाल। वॉल्यूम बहुत हाई है टुवर्ड्स दी बाई साइड। ओके, एक बार ऑप्शंस ऑप्शंस चेन देख लेते हैं फिर से। राइट नाउ 40,900 सी डीके तो कर रहा है, डीके कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है पर ये अच्छा खासा डीके कर जा रहा है। वन हंड्रेड 118 डीके हो रहा है भाई।
16 ओह डीके डीके जो हो रहा है, वाओ ब्यूटीफुल, नाइस, वेरी नाइस. Even though it's going up, डीके continuously हो रहा है guys. So again I'm saying today we have RBI policy at 10:30. Okay, so volatility is going to be at its peak, and अगर कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट कर देते हैं यहाँ से तो बहुत ही गंदा गिर जाएगा वो ना. But a rebound is definitely inevitable guys. ठीक है. ओके, गुड ग्रीन कैंडल, बहुत ही बढ़िया. पर अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू फिल अप द गैप. अभी कुछ भी हो सकता है, कैन टेक अ सपोर्ट. तब बड़ा कैंडल ग्रीन कैंडल बनाया तो गए हो सब प्रॉफिट हार्ट से, अगर कॉल शॉर्ट किया हुआ है तो. ये ऊपर जाके फिर से नीचे जाएगा.
It's breaking. Already I had told you that short C in the morning itself. Na? Beautiful red candle guys. अभी अगर ये तोड़ता है ना एकदम हार देगा पूरा. Hopefully, fingers crossed. Yes. Yes. Beautiful guys. Beautiful. Beautiful. 97. लो लगा दिया ये. 97. लो लगाया 97 का ही. 103 में आ गया. Hold it if you have shorted. If you have shorted C, hold it. Selling volume is also coming up nicely right now. Beautiful. Broken. ठीक है. It has broken. हाँ. गुड मॉर्निंग ब्रो. कितना प्रॉफिट कमाया कि नहीं? ये लाइन है अभी तक वो. हाँ. अच्छा खासा तो गिरा था. अच्छा खासा गिर गया भाई. अच्छा खासा गिर गया. हाँ अच्छा खासा. क्या कहा अच्छा खासा? 40,900 से अभी 40,800 में है. ठीक है. गिरने दे. सही तो है. इसको नीचे से पकड़ेंगे आज फिर से. आरबीआई पॉलिसी है आज. आज ही है क्या? अच्छा कब है आज? 10:30 बजे. बस अभी तब तक कुछ नहीं करते हैं फालतू का. उड़ेगा आज. उड़ने लग जाएगा मार्केट होपफुली. पता नहीं पॉलिसी है. अच्छा ही होगा. अच्छा ही बोलता है. आरबीआई पॉलिसी होता है इंडिया का. अगर पॉलिसी हुआ तो मार्केट उड़ने लगता है. वो खराब भी बोलते हैं तो भी उड़ने लगता है. कुछ खराब नहीं बोलेगा वो. तो अभी खेलने का कोई मतलब नहीं है. फालतू का प्रोग्रेस देना हो जाएगा. अभी तो खत्म. खेला तो खत्म हो गया. अभी सुबह का 70-80 पॉइंट्स कैप्चर आराम से. यार शॉर्ट करने में ही फायदा है यार. पुट वुट खरीदने में डर डर लगता है. कब कब साला स्पाइक कर दे. आज तो थोड़ा डर भी लग रहा था सुबह में. इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है. मतलब कल तुझे मैंने बोला था ना कि वो अपना स्ट्रक्चर को एक बार तो कंप्लीट करेगा. ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा. ऐसा करके ऊपर नहीं जा सकता ये. एटलीस्ट ऐसे करके ऊपर नहीं जाएगा ये नीचे आने ही वाला है. ओ डबल टॉप पैटर्न भी बना है एक ऊपर में. स्मॉल सुंदर एम पैटर्न एक.
चल ठीक है, फ्रेश हो जाता हूँ।
All right, guys. Sorry for the delay, and yes, as we can see that the market has taken a good amount of support over here at 40,837, and right now it's trying to go up. So what we can do over here is that most probably there would be a gap filling trade. Okay, just check the news once. Look at how I'm living. Whoa. Just look at how I'm living. Yeah. The defining characteristic of the monetary policy landscape. This he was saying in an era of great moderation and in more normal times compared to today's situation. What we are witnessing today is unprecedented uncertainty in geopolitics, economic activity, price pressures, and financial markets never seen before. Once again, one can imagine the magnitude of challenges central banks and other policymakers face in today's world. The Monetary Policy Committee met on 3rd, 5th and 6th April 2023 and assessed the macroeconomic situation and its outlook. It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting with readiness to act should the situation so warrant. Let me read this sentence again. The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC with readiness to act should the situation so warrant. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will remain unchanged at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me emphasize that the decision to pause on the repo rate is for this meeting only. I would now like to explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. While the recent high-frequency indicators suggest some improvement in global economic activity, the outlook is now tempered by additional downside risks from financial stability concerns. Headline inflation is moderating but remains well above the targets of central banks. These developments have led to heightened volatility in global financial markets as reflected in sizable two-way movements in bond yields, fall in equity markets, and the US dollar shedding its gains from its peak of September 2022. Amidst this volatility, the banking and non-banking financial service sectors in India remain healthy and financial markets have evolved in an orderly manner. Economic activity remains resilient and real GDP growth is expected to have been 7% in 22-23. Consumer price inflation, however, has increased since December 2022, driven by price pressures on cereals, milk and fruits. Core inflation remains elevated. Looking ahead, headline inflation is projected to moderate in 2023-24. The monetary policy actions taken since May 2022
are still working through the system. Accordingly, the MPC decided to keep the policy rate unchanged to assess the progress made so far while closely monitoring and evolving the inflation outlook. The MPC will not hesitate to take further action as may be required in its future meetings. To recapitulate the actions taken so far, we have increased the policy repo rate cumulatively by 250 basis points in the last 11 months starting May 22. This was preceded by introduction of the standing deposit facility, that is the SDF, at a rate 40 basis points higher than the fixed rate reverse repo. Thus, the effective rate hike since April last year has been 290 basis points, 290 basis points. These increases have been fully transmitted to the overnight weighted average call money rate, that is WACR, the operating target of monetary policy, which has gone up from daily average of 3.32% in March 22 to 6.52% in March 2023. It is now necessary to evaluate the cumulative impact of these rate hikes. Under these circumstances, we have to be extremely prudent in our actions. We have always been very watchful and have adopted a calibrated and balanced approach and will continue to do so. When we started the rate cut cycle in February 2019 to provide support to growth, the CPI inflation was around 2% and the policy repo rate was 6.5%. Now the policy rate is 6.5%, but inflation is 6.4% as per the February reading. Overall, inflation is above the target, and given its current level, the present policy rate can still be regarded as accommodative. Hence, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. What I now propose to do is to just briefly state about the growth and the inflation scenarios, and I will then try and sum up the broad approach which the monetary policy committee has taken, and I think that will give even greater clarity of what the monetary policy committee is doing. So, let me first take up growth. As stated earlier, India's real gross domestic product, that is GDP, is expected to have recorded a growth of 7% in 2022-23. Hence, economic activity remains resilient. On the supply side, Rabi food grains production is estimated to increase by 6.2% in 2022-23. PMI manufacturing remained robust at 56.4 in March, recording expansion for 21 consecutive months due to favorable domestic demand. Service sector activity exhibited buoyancy. PMI services remained in expansion zone at 57.8 in March, driven by favorable demand conditions and new business gains. Aggregate demand conditions were resilient in Q4 of 22-23, even as private consumption showed some signs of slowdown. Urban demand indicators like passenger vehicle sales and credit card spending registered robust growth in February, while consumer durables contracted in January. Rural demand indicators such as consumer non-durables, tractor and two-wheeler sales registered healthy growth. Investment activity exhibited buoyancy on the back of government's thrust on infrastructure spending, high capacity utilization, and revival in corporate investment in certain key sectors. Non-food bank credit rose by 15.4% year-on-year as on March 24th, 2023. The total flow of resources to the commercial sector has increased by 26 lakh crore during 2022-23 as against 19 lakh crore a year ago.
Merchandise exports and non-oil, non-gold imports contracted in February. Services exports continued to register robust growth. Supply chains are returning to normalcy globally as well as domestically. Looking ahead, the higher Rabi production has brightened the prospects for agriculture sector and rural demand. The steady growth in contact-intensive services should be positive for urban demand. The government's focus on capital expenditure, capacity utilization above long period average, and moderating commodity prices should bolster manufacturing and investment activity. The drag from the net external demand may continue due to increased global headwinds. The protracted geopolitical tensions and global financial market volatility pose downside risks to the outlook. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2023-24 is projected at 6.5%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6.1%, and Q4 at 5.9%. The risks are evenly balanced. Let me now turn to inflation. The softening in inflation during November-December 2022 turned out transitory, with CPI headline inflation breaching the upper tolerance threshold during January-February 23. A sharp turnaround in food inflation drove the pickup in headline inflation as core inflation remained elevated across a range of goods and services. Looking ahead, the expectation of a record Rabi harvest bodes well for easing of food price pressures. There are already evidence of a correction in wheat prices in March on supply-side interventions by the government. The impact of the recent unseasonal rains in some parts of the country, however, needs to be watched. Global commodity prices have moderated significantly from their heightened levels a year ago. As our surveys point out, cost conditions have somewhat eased. Inflation expectations of households have also eased down. On the upside, adverse climatic conditions are a risk to the future inflation trajectory. Milk prices are also likely to remain firm going into the summer season due to tight demand-supply balance and fodder cost pressures. The rising uncertainty in international financial markets and imported inflation pressures need to be monitored. Factors, and assuming an annual average crude price Indian basket of 80 and a normal monsoon, inflation pressures need to be monitored. Factors and for 23-24, with Q1 at 5.1%, Q2 at 5.4%, Q3 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. Now, let me summarize what I have said so far. We are living in very volatile times. The sudden announcement of an output cut by the OPEC Plus a few days ago and the resultant jump in crude oil prices is yet another evidence of this volatility. The overall outlook thus remains dynamic and fast evolving. Our monetary policy in the recent period has aimed for a non-disruptive normalization from the pandemic era stimulus measures. Even as monetary policy moved decisively to withdrawal of accommodation, financial conditions evolved in line. Game is over. Take care. I'll be taking some breakfast. Amazing rally. As I had expected, not that early, but जब आ गया अभी क्या ही करे, अभी और ऊपर जा सकता ही है.
एंड लेट्स सी लेटर ऑनवर्ड्स इफ वी गेट अ मूव. अभी थोड़ा कंसोलिडेट अगर करेगा फिर ये ऊपर जाएगा, देन आई बी एंटरिंग इनटू वन कॉल ऑप्शन बाय मूव. ठीक है, चलो टेक केयर एंड होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी.